So I introduce the concept of Stokes law. यहाँ पे पता है आपको स्टोक्स लॉ क्या होता है? चलिए, सो स्टोक्स लॉ कहता है कि whenever a solid body moves in a fluid, moves inside a fluid, it experiences a viscous force. वो जो है एक viscous force experience करता है, ठीक है? This force depends on, किस पे डिपेंड करता है? That is nature of liquid. When I say nature of liquid, that means eta, coefficient of viscosity of liquid, कि कितना विस्कस है. There are like oil. यदि आपको ऑयल में मूव करना होगा तो आपको ज्यादा विस्कस फोर्स लग रहा होगा, और यदि आपको वाटर में मूव करना होगा तो कम विस्कस फोर्स लग रहा होगा. नेचर ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वो बॉडी कितने तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है? जितने तेजी से मूव करेगा उतना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा. So this is a very important property of viscous force, that this viscous force is proportional to viscosity. Viscous force is proportional to velocity. This gives rise to a very interesting phenomena related. जहां पे भी कोई भी force velocity से directly proportional हो जाए, that gives rise to very interesting phenomena. Then the third factor on which this force depends is the shape and size of body. बॉडी का शेप और साइज कैसा है? बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? छोटा बॉडी होगा तो कम विस्कस फोर्स लगेगा, बड़ा बॉडी होगा तो ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एरिया दैट इज इन कांटेक्ट विद द लिक्विड. Yes. Understood? So these are the three factors on which the force, viscous force on a moving body inside a liquid acts. Right. तो आपको क्वेश्चन, क्वालिटेटिव क्वेश्चन आएगा कि there are two bodies, one a cube, another is big cube, another is small cube. Fine, both are moving, so which will experience more viscous force, or what is the Larger ratio car. of, ठीक है? तो larger one will experience more force. Now based on this there is a formula only for spheres, ठीक है? बस sphere के लिए एक formula है. The viscous force experienced by a spherical body moving in a liquid. This formula is empirical formula है ये सब, ठीक है? ये सब बस याद रखना है. This is 6 pi eta RV, ठीक है? Let me make a capital R. So what are these terms? Eta, coefficient of viscosity, R, radius, V, velocity, ठीक है? तो देखिए तीनों टर्म, तीन फैक्टर्स मैंने बताए थे, उन तीन फैक्टर्स का यहाँ पे बस आपको यदि ये फॉर्मूला भी याद रहेगा तो यहाँ से ही आप कह सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. सो सी, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना अब मैं बता रहा हूँ कि यदि एक बॉडी है, देयर इज अ बॉडी, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है F, which is a constant force, और इसके ऑपोजिट में एक फोर्स लग रहा है which is dependent on velocity. There is a force which is a function of velocity, directly proportional to velocity. So in such situation, जहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स और एक दूसरा फोर्स जहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, right? When it starts from rest, so initially क्या हो जाएगा गुराशीष? इनिशियली जो विस्कस फोर्स है जीरो होगा. जीरो होगा. एक्सेलेंट.
And as body accelerates, velocity increases. So viscous force जो होगा वो भी increase हो रहा होगा. So viscous force भी increase हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन घट जाएगी. एक्सेलरेशन घटती रहेगी तो एक समय ऐसा भी आएगा जब दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा. एट अ सर्टेन पॉइंट, it moves with constant speed. Certain point, F net is 0 and it moves with constant velocity. This velocity is called as terminal velocity. समझ में आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब? तो टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए. ये 11th 12th में एक्सपेरिमेंट भी रहता है लैब में, पता नहीं आप लोगों को करवाते हैं या नहीं करवाते हैं. हमारे टाइम पे तो हमें बहुत करना रहता था ये विस्कस लिक्विड में. सो देयर इज अ सॉलिड स्फीयर liquid. Eta is the coefficient of viscosity, rho is the density, r is the radius. Fine. It starts from rest. The cylinder is large enough. तो आप बताइए what is the terminal velocity? Calculate करके. Mass density, इसका density d है. Density of solid is d. So this is something like free body diagram में viscous force, buoyant force ऊपर होगा, mg नीचे होगा. तो टर्मिनल वेलोसिटी तब होगा जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा. दैट मींस mg minus fp minus f, this is 0. So this is mg. I can write this is 4 by 3 pi r cube dg minus viscous force, that is 6 pi eta r v terminal minus buoyant force, that is 4 by 3 pi r cube rho g is equal to 0. So I can write this as 4 by 3 pi r cube g d minus rho is 6 pi eta r vt. So terminal velocity is like 4 by 18 हो जाएगा ये. Pi gets cancelled out. By 18 r square d minus rho upon eta is the terminal velocity. The terminal velocity I get this as 2 by 9 r square g eta d minus rho. If you can remember this result, it will be very helpful. नहीं तो हर बार आपको एग्जाम में ये derive करना पड़ेगा, and that will take lot of time. This is a very standard result for a spherical ball moving inside a liquid surface.